as I promised, that will again start the revision. Since today is the day which is scheduled. Today is the day which is scheduled for environment and ecology, and tomorrow I will do my optional. So what I decided that I will complete. Try to complete as many content as I can in these. Today. Today, that is Wednesday, is a day for my ecology and environment section, and in this ecology and environment section we would be covering the static portion. Okay, static portion, some of the MCQs, and yes, with this we'll also cover some of the content of disaster management. Disaster management के कुछ PYQs solve करके देखूंगी मैं. That is the whole plan for today. See, I do not prefer planning the entire week. I do not prefer planning the entire month. I plan for a day. So in this day, I'll be working for environment and ecology. So let's get started with the content of environment and ecology. The source which I'm referring is a quite known source by all the UPSC aspirants. Literally aware about this content. So we'll revise these contents, and after that we'll also do certain MCQs. And yes, over a period of time we'll also cover the current affairs. But here one must note that as far as the current affairs are concerned, 1 to 1.5 years at least करे जाते हैं. But I'll be covering nearly 2 years of current affairs through MCQs only, because in the prelims we have to mark the MCQs. So that is the whole plan which we'll be working out, or will be devising the plan for the UPSC 2023. So let's get started with the content over here. So let's begin. So let's begin. Now we have environment and ecology में सबसे पहले जो पहला ही chapter है, that is आपका है, that is about the environment. So environment basically, ecology means ecology basically is made up of two words, oikos and logos. Or oikos meaning place, or means a place or to live, and logos का मतलब होता है study. So ecology का मतलब क्या होता है? Study of home of nature, कि जहाँ nature का जो घर है. इसके बाद इसमें या home of nature basically इस तरीके से हम याद कर लेते हैं. अब कौन सा word किसने दिया है, that is very very important over here in this context. यहाँ पर दो तरह की हमें याद रखना है कि when we are focusing on ecology, we have certain points that ecology में Ernest Haeckel coined the term ecology. Then we have the term which is environment. Environment has been given by E.G. Tinsley. Ecosystem, the word has been given by E.G. Tinsley. Now environment का क्या मतलब होता है? Environment is nothing but a sum total of biotic and abiotic factors. As far as we are concerned about the biotic and the abiotic factors, biotic means living, abiotic means when we have abiotic literally in clear sense means they are non-living, right? So this is all about it. So it is a sum total of all the biotic and the abiotic elements or abiotic components. So this makes the environment. Now we have the environment. As far as we are concerned, we have so many things in this. See, every individual has an environment. Like a saltwater fish cannot survive in a fresh water, and a freshwater fish cannot survive in a salt water. And then you have so many levels of ecology. Levels of ecology are various. Like we have individual for first case. Individual के बाद हमारे पास population होती है. Then होती है हमारे पास population के बाद we have a community. Population का मतलब क्या होता है? What is a population? It's a group of organisms, ठीक है, which जो are capable of interbreeding. जैसे for example human population को कहा जाता है, humans are called as Homo sapiens, right? And उनसे पहले वाले होते थे Cro-Magnon, and जो future वाले हैं they are known as Homo sapiens futurists, right? So this is the then this is tiger के लिए हम use करते हैं the word Panthera tigris. Panthera tigris is a word for tiger, right? Pisum sativum is a word we use for peas. Then you have Solanum tubersum. Solanum
nigrum. These are the words for tomato and potato respectively. So we have communities also. Now communities हमारी जब हमने बोला कि पहले इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के बाद हमारे पास में पॉपुलेशन है, देन वी हैव द कम्युनिटी. विद द कम्युनिटी हमारे पास दो तरह की कम्युनिटी है, मेजर कम्युनिटीज एंड माइनर कम्युनिटीज. मेजर कम्युनिटीज को आप बोलते हैं कि ये रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होती हैं और जो ऑफ द आउटसाइड इन्वायरमेंट. और जो माइनर कम्युनिटीज होती हैं, दे आर कॉल्ड एज societies, and they are interdependent. All right. So this is a very very important thing here, that these minor communities or societies, they are interdependent on each other. देन हमारे पास में आता है अगला कि स्ट्रक्चर. हमारा इकोसिस्टम क्या है. इकोसिस्टम बेसिकली एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, ऑफ बायोस्फीयर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोस्फीयर. नाउ बायोस्फीयर इज अ वेरी वेरी सिंपल टर्म जो हम यूज करते हैं. क्या होता है बायोस्फीयर? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, where all these three interact. Air for atmosphere, hydro means water, and lithosphere means land. Where all these three interact, that narrow zone is known as biosphere. So let's say this is the air, this is the water, and this is the land. When all these three, where they are interacting, it narrows a zone that is known as biosphere, and that biosphere is responsible for life. All right. So now we'll move on to the abiotic components. We have so many abiotic components as well. Abiotic components are literally nothing but they are the non-living components. Non-living components are the abiotic components. When you talk about the abiotic components, we have non-living components. So what are these? They are energy. Then we have the rainfall, we have temperature, we have atmosphere, we have substratum and materials. So energy के लिए in the subsequent chapters we will be reading about. Energy जो है is एक तरह से universal है. Universal as in case it is universal energy का law है. Universal से मेरा मतलब ये है it is responsible for the entire processes in the world. For the most important process which is for which we need energy is the photosynthesis process, which is responsible for the oxygen generation, right? That is very very important, which is the this. Okay, and then we have energy may you have the pyramid of, we have now in the subsequent chapters we'll be focusing about trophic levels, pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. But this is in the second chapter of the book, or the second chapter of the publication. In this chapter here, chapter 1, we are covering about what is energy is responsible for entire processes, all the metabolic processes of human body जो होती हैं, they took place or they can be carried out only in the presence of energy. Then let's move further. Let's revise. Now we have the latitude and the altitude and the biodiversity. As far as we are considered, we are focusing on the biodiversity. Now bio means life and diversity means variety. So here जैसे how the temperature का क्या impact होता है on biodiversity depend करता है ना भाई. सीधी सी बात है, जैसे डेजर्ट की बात कर लेते हैं और आप एक तरफ एग्जाम्पल के लिए बात करिए पोलर रीजन की. डेजर्ट में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है. तो यहाँ जो प्लांट्स होंगे या यहाँ जो एनिमल्स होंगे वो होंगे विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. और ये जो पोलर आपका रीजन है, जो जहाँ पर वो आपका आइस है, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, यहाँ आपको मॉसेस, हेज और लाइकेंस, ये सारी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी क्योंकि टेम्परेचर का फर्क पड़ता है. और जो बेस्ट आपका एक तो होता है इक्वेटोरियल रीजन्स का मतलब ही ये होता है दैट मतलब एक तरह से व्हाट इज इक्वेटोरियल रीजन विच इज क्लोज टू द इक्वेटर. So India is also close to the equator country. So we have Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Equator, Arctic Circle, Antarctic Circle. All these are there, right? So this is a complete concept. We'll dwell when we'll be revising about geography. तब इसको करेंगे, लेकिन ये चीज है. Now अब next चलते हैं कि भैया हमारे पास में ये प्रोड्यूसर्स कौन है. एक इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोड्यूसर्स. द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड दे आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. देन वी हैव द हेटेरोट्रॉफ्स. द हेटेरोट्रॉफ्स आर द पर्सन्स, दे आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. नाउ वी आर हेटेरोट्रॉफ्स बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड एनिमल फॉर फूड, बट द green plants are producers, right? So now
Let's go on to one more thing. Now we have two words, the herbivores, the carnivores and the omnivores. Herbivores जो है ये plant eating animals होते हैं, carnivores flesh eating होते हैं, and omnivore का best example है man. Man क्या है? It can eat both आपका vegetarian food and the non-vegetarian food. So इसको कहा जाता है omnivores की category में रखा जाता है. Now let's moving on further. Another point which we have is the ecosystem. Ecosystem, and before that we have the services. The services which we get from the ecosystem are various, like we get fuel, we get food, we get fodder, right? All this is there, food, fuel, fodder, and then let's give a cursory glance to it. Provision of food, fuel and fiber, provision of shelter and building material. Then we have purification of air and water, and then we have प्यूरिफिकेशन एयर एंड वाटर के बाद भी हैव डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है इसका, ठीक है, जनरेशन. तो इट्स अ वेरी cursory thing. We can just give a cursory glance to it and we can easily hit the MCQs. And for even if we have to write about it in detail, we can easily write what is ecosystem. Now ecosystem is a very simple concept. We are reading about it in since class 7 or class 6. Right now we'll go on to ecotone. ecotone क्या होता है? देखो, दो ट्रांजिशन जोन जहां पर है ना, उनका दो अलग अलग जोन्स, जैसे मान लो यहाँ पर आपका है सी वाटर, हियर आपका है फ्रेश वाटर. जहाँ सी वाटर और फ्रेश वाटर जहां मिल रहे हैं, लेट्स से दिस इज द सी वाटर, दिस इज द फ्रेश वाटर, एंड वेयर दीज टू दे आर मीटिंग, this point of meeting is known as the ecotone or estuary, and this point is a zone of tension. First thing, again it can be very narrow or quite wide. Secondly, ये जो ecotone होता है बहुत ज़्यादा diverse होता है, it is rich in diversity. Let's move on further. It can be very narrow or quite wide. It has the conditions intermediate to the adjacent zones. Then we have it, a well developed ecotone contains some organisms which are entirely different from the other ठीक है. Then we have sometimes the number of species and the population density of some of the species is much greater in this zone than either community. That is also one of the case कि कई बार होता है वो आपके edge effect, और वो जो species है उनको कहा जाता है edge species. That is a separate concept. Now we have another term which is niche. Now the first chapter is all about terms. It is all focus on terms like we have ecological niche, we have the term biosphere, we have the term individual, we have the term population, we have the term community, we have the term transition zone, we have the term ecotone. There's so many terms are there. Ecology, autocology, syncology, all these terms. The first chapter is the very basic chapter, however, a most important chapter of environment and ecology, which and often we get MCQs out of this chapter. Now, niche का मतलब क्या होता है? Unique functional role of an organism in an ecosystem is known as niche. Now, niche काफी तरीके का होता है. जैसे for example, हर individual का अपना एक घर होता है. उसका ये मान लीजिए घर है, let's say this is an house, और उस हाउस का एक एड्रेस होता है. सिमिलरली हर ऑर्गेनिज्म का एक हैबिटेट नीश होता है, एक रिप्रोडक्टिव नीश होता है, एक फूडिंग, एक जो है उसका फूड नीश होता है, वो क्या खाता है, कैसे खाता है, कब खाता है, डिपेंड करता है. और इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म इन डिटेल, यू मस्ट स्टडी अबाउट द नीश. नाउ वी हैव द बायोम्स, और बायोम्स हमारे पास काफी सारे हैं. सो बायोम्स काफी सारे हैं, एंड इनफैक्ट हमारे पास में ऑर्गेनिज्म, जब हम वाटर की बात करते हैं ना, इससे पहले बिफोर वी टर्न टू द बायोम, लेट अस फोकस ऑन द वाटर. वाटर हमारे पास में किस तरीके के होते हैं, या जो इकोसिस्टम है हमारे पास में दो तरीके के होते हैं. आपका एक तो होता है टेरेस्ट्रियल, दूसरा होता है एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल का मतलब किस तरीके से हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए और डेजर्ट्स हो गए. ठीक है, डेजर्ट्स की जो आपको वेजिटेशन मिलेगी वो अलग है. ग्रासलैंड्स विल बी डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, और क्योंकि यहाँ ग्रासेस होंगे तो यहाँ पे जो एक्टिव ग्रेजर्स हैं, बाइसन, भैंसा वगैरह, ये बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये ग्रास वगैरह खाते हैं. एंड देन आपका जो फॉरेस्ट है उसमें आपको हाइपर पैरासाइट्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक जो हमारा इकोसिस्टम होता है या उसमें आपका होता है फ्रेश लेक्स होते हैं, सेलाइन लेक्स होते हैं, मराइन वाटर होता है. तो इन चैप्टर 4 ऑफ दिस पब्लिकेशन ओनली which I am referring, will be focusing about what is fresh water, what is saline water, what is marine water. See,
5 to 35 ppt is fresh water, ठीक है, लेकिन we'll be dealing about it, ठीक है. So we'll be focusing about all these concepts in the aquatic के बारे में क्या है, what is fresh water, what is saline water, what is marine water, all this is in a detail in chapter number 4 of the publication which I am referring for my revisions. Now अब देखिए कि इसमें क्या होता है ना, देखो अब यहाँ पर क्या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स हैं, फ्रेश वाटर है, सलाइन है, मराइन वाटर है, और हमने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पहले ही बात कर ली. इकोटोन वी हैव जस्ट कवर्ड कि इकोटोन क्या है, ऐसा एरिया जहाँ पे दो या दो से ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम्स का मिलन हो रहा है, वेयर दे आर मीटिंग, द जोन ऑफ देयर मीटिंग और जोन ऑफ जंक्शन, दैट इज नोन एज द इकोटोन. ओके, now let's move on to the biomes. The biomes are very clear. इसमें हमारे पास काफी सारे biomes हैं, and this is, ये जो chart है ना, this is very important, but here you must note कि this chart is very important, no doubt, but this chart you will be able to learn only with frequent revisions. इसमें टुंड्रा के बारे में, टैगा के बारे में, temperate, deciduous, tropical rainforest. Now tropical rainforest is also known as the lungs of the earth. Lungs of the earth, right? Because tropical rainforest है, high temperature, high rainfall, canopious trees, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे, और इसीलिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनको कहा जाता है lungs of the earth. Okay, then you have दी सवाना. सवाना क्या है, आपका एक्सटेंसिवली अफ्रीका में पाया जाता है. जैसे मान लीजिए यहाँ ट्री है, फिर यहाँ पे आपकी स्कैटर्ड ग्रासेस हैं, फिर ट्रीज हैं, फिर स्कैटर्ड ग्रासेस हैं. दिस इज अ सवाना रीजन. देन वी हैव हियर ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स तो सिंपल ही है. ग्रासलैंड्स का मतलब ही क्या है, दे आर बेसिकली डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस. देन वी हैव द डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में हमारी अगर हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट्स. सो डेजर्ट इज एन एरिया जहाँ पर लेस रेनफॉल है, स्कैंटी रेनफॉल है, बट द टेम्परेचर इज वेरी हाई, सो वी कॉल इट अ डेजर्ट. सो हियर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सक्यूलेंट्स हैं, व्हिच कैन लिव इन लेस वाटर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. और उनके जो उनका जो तरीका होता है ना, आई मीन दे हैव इस तरह के, जैसे कैक्टस है, वो थॉर्नी होता है, तो जो थॉर्न्स वगैरह हैं, दे हेल्प हिम इन रिड्यूसिंग द ट्रांसपिरेशन और लॉस ऑफ वाटर. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. लेट्स नाउ मूव ऑन टू डेजर्ट्स क्या हैं, ग्रासलैंड्स क्या हैं, यहाँ पर कौन कौन है, ग्रासलैंड्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. दिस यू विल बी रीडिंग. जैसे हमने अभी आपको बताया कि वॉल्स हैं, ठीक है, उसके अलावा प्रेरी डॉग्स हैं, ये आपको ग्रासलैंड्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, ग्रासेस यहाँ डोमिनेट करती हैं. तो फौना भी इसी तरीके की होंगे, जो हर्बीवोर्स होंगे, जो घास खाते होंगे. नेचुरली सीधी सी बात है, अब जहाँ घास है वहाँ आपको वो नहीं मिलेगा जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल है. वेयर यू हैव प्लांट्स यू विल फाइंड दी ऑर्गेनिजम्स who are grass eaters. Okay, simple logic. Then you have the biosphere. I've already covered what is biosphere. The atmosphere, hydrosphere, lithosphere, where all these three interact, we have it is known as the biosphere. Now the fresh water हमारा दो तरीके का होता है. आपको एक याद रखना है कि fresh water के केस में you have two things, lentic and the low-tech fresh water. Lentic fresh water होता है stagnant fresh water, जैसे pond, तालाब में. लेकिन low-tech fresh water क्या है, वो running होता है, like the rivers, ठीक है, like the streams, right, like the brooks example. So this is all about the lentic and low-tech fresh water. Coral reefs, you will be reading about coral reefs in detail. They are called as tropical rainforest of the oceans. As far as corals are concerned, हमारे पास में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा कोरल है, that is the Great Barrier Reef of Australia. That is it. हमारे इंडिया में भी बहुत सारे कोरल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है. अटॉल्स हैं हमारे पास में, फ्रिंजिंग रीफ्स हैं, ठीक है. All these reefs are there. We'll be dealing with this chapter subsequently and separately in the environment series only. So this is the first chapter which we have covered. What is the freshwater ecosystem? What is the marine water ecosystem? What are the estuaries? What are mangroves? Mangroves, we'll be dealing about the mangrove profile separately in the next chapter, because it is covered extensively in this publication. I mean, in the subsequent chapters, we'll be covering about it in details. So this was a very basic chapter of environment and ecology which I have recently covered. I hope you liked the video. Do like, share and subscribe to the channel. And yes, do leave me your valuable feedbacks in the comment section. We'll meet you tomorrow. We'll meet you after a short while for the next video. And the next chapter which I'm going to revise is the functions of ecosystem. I hope you liked the video. Thank you.